वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे वेब मैप कैसे बनाते हैं वॉल्यूम से। तो शुरू करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर बना लेंगे। जस्ट क्रिएट अ फोल्डर विच इज एम्प्टी मैपिंग करके। ये लोकल डिस्क डी में है, आप उसको कहीं भी डाल सकते हैं आपके मुताबिक। पाइथन में इतना ज़्यादा नहीं आता है लाइब्रेरी, तो हमको वॉल्यूम जो है वो अलग से लेना होगा। सो ये हमारा एटम है, हमने एटम ओपन हो गया। ये इसके अंदर हमको वो मैपिंग जो है, जो हमने बनाया है, वो ओपन करने का है। इसमें लेट्स ओपन दैट। व्यू में जाके देन डेवलप ऑप्शन, open in dev mode, and you can see mapping. Select mapping। जो आपकी सेव फाइल है सब कुछ वहाँ पे सेव होंगी। तो अब हम ये आ गया हमारा मैपिंग, इसमें ओपन हो गया है। हम इसे बंद। ये आ गया है मैपिंग जिसमें कुछ भी नहीं है, इट्स एम्प्टी। अब हमको वॉल्यूम now let's install volume. Here we have open in the location of mapping. So to install volume, it's pip install volume. And the volume will be installed. In my case, the volume was installed, so the requirements is already satisfied. So let's go and open the Python over here. And the Python is open here, and we will import volume. Yes, and you can see volume has been imported successfully. There was no error। इसका मतलब है कि वॉल्यूम सही से हो चुका है। So let's go here। So now we will create the object। The object is map। So to see the objects, so let's type in dir volume, and you can see the objects over here. There are so many objects, and we have create a map. There is a map,
So let's go. So let's create a map. So it will be map volume dot map, and we should pass the location. Location will be the latitude and the longitude of any of the map pass in the list, as we got as 80 minus, wait over here, and this will I think open in Alaska or somewhere. Look at the brackets, be careful by the brackets. And yes, the object was created. See that? The object is a map. So now let's save the map. So let's save as map dot save in the double quotes. Let's give a name for the map. Let's say map1 dot html. The map will be created in HTML file. Yes, of course, it should be created in an HTML file there. And there you go. And this was saved. As you can see here, आप देख सकते हैं कि मैप यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है. It's in the HTML file. ये बिल्कुल बहुत ही आसान है ये वॉल्यूम, जहाँ पे हमको सीधा ही मैप बनाने की इजाज़त दे देता है. हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. और ये देखिए हमारा लोकेशन, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यहाँ पे हमने लिख दिया गया था. यहाँ पे it's 80 and minus. तो हम यहाँ पे जाएंगे हमारी मैपिंग में. ये देखिए आप, you can see this, it's a map. मेगन आइलैंड से यहाँ पे ओपन हुआ है. You can see the map. बिल्कुल सही जा रहा है ये मैप. तो ये बन गया है हमारा बेसिक मैप यहाँ पे. और हमको ओपन यहाँ पे हमको चेंज करना है. अगर हमारा देख सकते हैं आप, हम यहाँ से ही इसको निकाल लेंगे. This is the longitude, and let's the east one. Save.
यहाँ पे सेव हो जाएगा ये। अब फिर हम यहाँ पे इसी को ही खोल के देखेंगे। ये देखिए हमारा मैप हमारे लोकेशन के ऊपर ही आ रहा है। तो हम जो भी लोकेशन डाल सकते हैं, हम आपकी चॉइस है। इट्स योर चॉइस दैट यू कैन पुट योर location of longitude and latitude as per your choice. तो ये हमारा मैपिंग था, बेसिक मैप जो हमने बना लिया है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट द पॉइंट्स इन द मैप और काफी सारी चीजें। तो आप you can play with this with different things and just practice over it and you will get it. So thank you. हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर।